सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अमाइलोडोसिस के बारे में. सो पहले यू शुड नो व्हाट इज एमिलॉइड. दिस amyloid, it is a protein. Okay, it is what? It is a protein, or you can say not protein, it is actually a proteoglycan. Proteoglycan. So एमिलॉइड होता है ना, ये क्या है? एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है. दिस इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कि जर्नली आपको एक्स्ट्रा सेलुलरली देखने को मिलता है. सो इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली. ओके, और यू कैन से प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स. नाउ जर्नली ये जो एमिलॉइड होता है ना, अब व्हाट इज अमाइलोडोसिस? इट इज अ एबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन. सो अगर हमें अमाइलोडोसिस को डिफाइन करना हो, amyloidosis means amyl means amyloid protein and osis is a abnormal condition. So it is a abnormal deposition of amyloid protein. Okay, now you can see this amyloid protein deposition via two things. What are those? First, you can go for electron microscopy, and other is the X-ray crystallography. On X-ray crystallography, you can appreciate the beta-plated structure of amyloid. These are like this beta-plated sheath. Okay. Now this beta-plated sheath structure is mainly responsible for the apple green birefringence. So this is responsible for apple green birefringence. Okay. Now on electron microscopy, you can clearly see the fibrillar structure of the amyloid, and here when you see the diameter of amyloid is what? That is 7.5 to 10 nanometers. Okay, so this you have to remember. Okay, now we'll discuss about different types of amyloidosis. So first, amyloidosis types. So generally there are three types of amyloidosis. Three types कौन कौन सी हैं? First is localized. Second amyloidosis is what? That is systemic. And third amyloidosis is familial. Okay, so these are the different types of amyloidosis. तो first हम discuss करेंगे सिस्टमिक के बारे में. सो जर्नली जो सिस्टमिक अमाइलोडोसिस होती है ना, इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइलोडोसिस एंड अदर इज सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलोडोसिस. प्राइमरी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? दैट इज मल्टीपल माइलोमा. नाउ व्हाट इज दिस मल्टीपल माइलोमा? एक्चुअली जर्नली आपको मल्टीपल माइलोमा जो है ना, ये प्लाज्मा सेल का कैंसर है. इट इज अ प्लाज्मा सेल कैंसर्स. एंड यू नो प्लाज्मा सेल का क्या फंक्शन है? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये प्रोड्यूस करेंगे. अब सी, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगी
मल्टीपल माइलोमा में, क्या ये नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी? Obviously not, because these immunoglobulins are synthesized from cancerous cell. So these are the abnormal immunoglobulins. Okay? Now, if they are abnormal, अब क्या abnormality हो सकती है? You know कि हमारी जो immunoglobulins हैं उनमें लाइट चेन और हैवी चेन होती है, बट ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगी बाय दीज कैंसरस प्लाज्मा सेल, यहाँ पे यू कैन एप्रिशिएट द लाइट चेन्स आर मोर देन द हैवी चेन्स. ओके, लाइट चेन्स ज़्यादा होंगी. नाउ अब अगर लाइट चेन ज़्यादा है तो यू गोना सी अ पर्टिकुलर amyloid in this primary one, that is AL amyloid. Okay, AL मतलब A stands for amyloid, whereas L stands for the light chain. So अगर कोई आपसे पूछे in case of primary systemic which kind of amyloid you are gonna find, that is AL type of amyloid deposition. Generally एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो लाइट चेन होती है ना, ये फर्दर कंपोज्ड होती है कापा और लेम्डा की. इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ कापा एंड लेम्डा. ओके, अब ये जो सेकेंडरी अमाइलोडोसिस होती है ना, यहाँ पे मेनली क्या कॉज होता है? द मोस्ट कॉमन कॉज इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटिक arthritis. Now see what is happening here. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे chronic inflammation present है. Chronic inflammation is there. Due to this chronic inflammation क्या होगा? हमारी बॉडी में there is a secretion of interleukins. अब वो interleukins कौन से होंगे? Interleukins are gonna, now this interleukin is gonna activate liver, और further due to this activation liver क्या करेगा? Liver is gonna secrete serum associated amyloid. Okay, due to the activation of liver this will be secreted. Now they can ask you a question. In secondary amyloidosis, which kind of amyloid deposition you gonna see? So in case of secondary amyloidosis, there is mainly AA types of amyloid deposition. A is for associated amyloid. Okay, so just remember this, like, okay. Now we'll discuss about this. Just come to this part, this AL part. Now I have told you in case of primary systemic amyloidosis there is a AL deposition. Okay, when this AL amyloid is gonna deposit in kidney, we call that kidney is a what? Amyloid kidney. We called it is gonna deposit in kidney, and उस किडनी को हम क्या बोलेंगे? एमिलॉइड किडनी. अब अगर किडनी में एमाइलॉइड डेपोजिशन है तो क्या होगा? अब ये एमिलॉइड यूरिन के ज़रिए बाहर आना शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ BJP. Now what is this BJP? This is Bence-Jones protein. So you know कि हमने पहले बोला था कि मल्टीपल माइलोमा में यूरिन में क्या आता है? Bence-Jones protein. Now you came to know कैसे ये आएगा. Now other thing I'm gonna discuss is the localized amyloidosis. Localized amyloidosis. Now what are the example of this localized amyloidosis?
So first is amyloid calcitonin deposition. ये amyloid calcitonin क्या है? A-cal. ये जर्नली आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड. ओके. सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है? दैट इज ए बीटा अमाइलॉइड डेपोजिशन. अभी आपको कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज इन द अल्जाइमर्स डिजीज. नाउ one more kind of amyloid deposition is that is APR amyloid deposition. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इन केस ऑफ Prions disease. Okay, so these are the various examples of localized amyloid. Now there is a third category. Third is what? That is familial. Third is the familial amyloid deposition. Okay, familial के केस में you have to remember two diseases. What are they? First is familial amyloidotic polyneuropathy. First is familial polyneuropathy. Here what is you're gonna find? First, this familial amyloidotic polyneuropathy, it is an autosomal dominant disorder. It is what? Autosomal dominant disorder. And generally this is due to the ATTR amyloid. ATTR amyloid. Now what is this ATTR? This is a amyloid transthyretin. Transthyretin. Okay. Due to this ATTR deposition, you're gonna see this familial amyloidotic polyneuropathy. Generally, this ATTR is also involved in the cardiac amyloidosis. So just remember, it is involved in cardiac amyloidosis. Okay. Now there is another disease, that is familial Mediterranean fever. Mediterranean fever. Now what is this? This is a autosomal recessive disorder, and this is generally due to the mutation of the which gene? This familial Mediterranean fever is mainly due to the mutation of pyrin gene. So this is due to mutation of pyrin gene. मीन्स ये पायरिन जीन अगर म्यूटेट हो जाएगा तभी फीवर आएगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. यहाँ पे जो अमाइलॉइड डेपोजिशन आपको देखने को मिलेगी, सो इट इज़ अ ए टाइप अमाइलॉइड. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वाला मैकेनिज्म, तो ए विल बी देयर. Now we're going to discuss about various diseases, and in those diseases which kind of amyloid is deposit we'll discuss. So one column just write diseases and another amyloid. Okay, so first is the chronic inflammation. Chronic inflammation. तो हमने क्या बोला? Chronic inflammation में which kind of amyloid you're gonna see? That is AA type of amyloid. AA associated with interleukin 6. Second disease, that is cancers. Cancers में हमने कौन सा amyloid पढ़ा था?
It is also a chronic condition. Don't think about the multiple myeloma case. It is a different scenario. Cancer is a chronic process ना, so mainly यहाँ पे क्या होगा? There is also which kind of a myeloid? AA associated myeloid. Associated with interleukin 6. Third, familial Mediterranean fever. So which kind of a myeloid is there? Here, mainly AA associated with interleukin 6 type of amyloid is there. Now, medullary carcinoma, carcinoma of thyroid. तो यहाँ पे कैसा टाइप अमाइलॉइड देखने को मिला था आपको? दैट इज ACAL. That is amyloid calcitonin. You're gonna see. Other कौन सी कंडीशन हमने डिस्कस की? That is our familial amyloidotic polyneuropathy. Polyneuropathy. Here you're gonna see which kind of amyloid, that is ATTR, that is amyloid transthyretin. It is a mutant form, okay? Now, other is systemic senile amyloidosis. Systemic senile amyloidosis. Here you're gonna find which kind of amyloid, that is ATTR. Same like this, okay? Then Alzheimer's disease में हमने क्या डिस्कस किया? Alzheimer's disease, there is A beta amyloid. A beta amyloid. Other, in case of hemodialysis, कौन सा अमाइलॉइड होता है? दिस इज A beta 2. A beta 2. Alzheimer में A beta amyloid is there. In case of hemodialysis, there is A beta 2 amyloid. Now, in case of multiple myeloma, which kind of amyloid you're gonna see? That is AL amyloid. AL amyloid. Now you have to remember all these diseases and which kind of amyloid you're gonna see in these particular diseases. Okay. Now which stain we can use here? First is Congo red. If you use this Congo red stain, what kind of color you gonna see? That is the salmon pink color of amyloid. Salmon pink color of amyloid. Okay. Second, we can use is thioflavin. Thioflavin. और thioflavin में कैसा दिखेगा ये? It will be, so thioflavin में amyloid कैसा दिखेगा? Yellow in color. अगर वो आपसे पूछें best stain for amyloid, that is this Congo red. Congo red is the best stain. Okay. When you use Congo red stain, okay, you can use either light microscopy and you can go for polarized light. और when like हमने स्टेन डाला, उसके बाद हमने उसको लाइट माइक्रोस्कोपी के मतलब अंदर देखना शुरू किया, तो मैंने आपको बताया विच कलर विल बी देयर? सैल्मन पिंक. सैल्मन पिंक कलर विल बी देयर.
बट जब आप इसको पोलराइज्ड लाइट के अंडर देखोगे ना तो कैसा कलर देखने को मिलेगा? एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन by refringence. Okay, now this is under the polarized microscope. Okay, अब we gonna see this amyloid under X-ray crystallography. And under this X-ray crystallography or EM, I have already explained you what you're gonna find. That is beta plated sheath is there, fibrillar structure is there, diameter that is 7 to 10 mm. So these are the finding. Now the best site to find amyloid is which one? It is abdominal fat aspiration. So abdominal fat aspiration is the best site for diagnosis of amyloidosis. Okay, this is the first best site. Now they can ask you which is the second best site. Second best site for seeing this amyloid deposition is, you can go for rectal biopsy. This is the second best thing or best site you can use to see this amyloid deposition. Now we're gonna discuss organs and the site where in that organs particularly आप कहाँ amyloid deposition देखोगे. So organ और कहाँ पे आपको amyloid देखने को मिलेगा. So first organ I'm gonna discuss is kidney. See, kidney is the most common place where a amyloid can get deposited. So it is a most commonly involved in amyloidosis. और हमने पढ़ा है कि कौन सा amyloid आके रिपीट और हमने पढ़ा था कि amyloid कौन सा डिपॉजिट होगा in case of hemodialysis, that is A beta 2. Now किडनी में amyloid कहाँ पे मेनली डिपॉजिट होगा? दैट इज mesengium, mesengium of kidney. Okay, mesengium of kidney. Now second is heart. In heart, if the amyloid got deposit, then it can cause arrhythmia. So अगर आपसे पूछें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ अमाइलोडोसिस, दैट इज व्हाट? एरिथमिया की वजह से, बिकॉज वो अमाइलॉइड कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? इन हार्ट. अब वो पूछे हार्ट में कहाँ पे मेनली, सो योर आंसर मस्ट बी सब एंडोकार्डियम. व्हाट इज दैट? सब एंडोकार्डियम. थर्ड इज लिवर. नाउ लिवर में ये कहाँ होगा? दैट इज इन द स्पेस ऑफ DC. फोर्थ कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन. स्प्लीन, रेड पल्प एंड स्प्लीन का वाइट पल्प. If we are talking about spleen red pulp, so generally spleen के red pulp की अगर हम बात करें, यहाँ पे mainly sinusoids में होगा, में amyloid deposit होगा. और इस spleen को हम क्या बोलेंगे? This is called as Lordaceous spleen. See how you can remember this. That is L for Lal and L for Lordaceous spleen. ठीक है, L एंड रेड में, रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लाल.
So via this you can remember. Okay. Now in case of spleen, white pulp, where it is gonna deposit? In the follicles. अगर ये follicles में होगा deposit तो we called it as a sago-spleen. Sago-spleen. Okay. Now what is the other organ? So if this amyloid got deposited in skin, it will cause what? Pinch purpura. Pinch purpura. Okay. And if this amyloid got deposited in GIT, it can cause what? It can cause organomegaly. Okay. And blood vessel में where it is gonna deposit? Blood vessels में it is gonna deposit in subendothelium. Okay. Now see, this is a different kind of amyloids and their deposition in the various organs. So I hope this topic is clear to you. So thanks for watching, guys.